Not live yet. Actually, I was about to ask that. Oh my God. Okay. So I thought you are just practicing this or not something like that. Now we are live. Okay. Let me say that Yeah, again. sure. Namaste to everyone and welcome to a brand new show. There seems to be have been a technical glitch again. So namaste again and welcome to a brand new show, Sadhaks of Sadhana. Sadhaks of Sadhana is our new show on the Vedic Sadhana Foundation's official YouTube channel, where we will bring you interesting experiences and perspectives of sadhana by practicing sadhaks and more. My name is Devi Shobha Chandramauli. I am the head of marketing at Vedic Sadhana Foundation, and it brings me immense pleasure to be here before you presenting this new Sadhaks of Sadhana show. Also, as many of you know, Vedic Sadhana Foundation is a non-profit organization that is dedicated towards spreading the flame of Sanatan Dharma, towards reviving our Vedic glory. And our only mission is to keep it alive and spread it, especially for our future generation. And before I tell you about our special guest for today on the Sadhaks of Sadhana show, please allow me a minute to apologize for the technical glitches from the last episode and perhaps even today, due to which the last time, both the introduction of the show, which was the first episode of the Sadhaks of Sadhana show, was missed. The airing was missed. The introduction of the guest was also missed. So apologies for that. Um, our guest on the last episode, the show was Parak Om Bhatt. If you missed the episode, you could go right on to our channel and find it right after this episode. To tell you about our guest for today, very special again, Abhishek Om Sharma. Abhishek Sharma is all of 22 years and he has achieved the pipe dream of so many of our youth already, which makes him very special. And he also does something that is that is very aspirational for so many other people, especially the youth. He has secured 14th position in 14th position all India in his 14th position in the state of Himachal Pradesh in his 10th standard. So from then on, he has had a very bright streak. 20th position in his 12th standard all India, and then cracked the IIT JEE and got selected in NIT Hamirpur, which is one of the top engineering institutions. And then he was also holding the position of president of the Chemical Society of his own department. He volunteered in NSS. He was the editor of the Hindi magazine of his college, got selected in an MNC immediately afterwards, and then dropped it to pursue his dreams further. He also got selected in the National Youth Parliament Festival 2023, which is very recent, to represent his state, Himachal Pradesh, at a national level. That is amazing, Abhishek. This is so special and such an honor and so amazing for you to be on our show. And it's such a pleasure to have you here. Welcome. Welcome to the Sadhaks of Sadhana show. A hearty welcome to you. Thank you, Jai Shri Hari. Thanks Jai for Shri. such a warm greeting and welcome, Devi Shobha ji. Pleasure. बहुत My बहुत pleasure. धन्यवाद आपका. So Yes. So, Abhishek, from your profile, something that's really stood out was that you come from Himachal Pradesh, which is also called Devbhumi, because of all the amazing temples and the many sacred places that are in that state. Um, and being there, you have accomplished so much. While we see so many youngsters moving to other areas, even moving outside of the country in search of greener pastures, and you are someone who has stuck to your roots, kept your culture very much alive. You have been a practicing sadhak, from a very young age as well, and you've literally carved a niche for yourself with all these great accomplishments at such a young age. So tell us a little about how it was all for you growing up. How did you find your niche, and how did sadhana play a role in your life?
Okay, so first of all, I would like to invoke Bhagwan Vignaharta Ganpati so that there comes no obstacles further. So just a minute. Oh, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपति नमः श्री सांब शिवाय नमः मे हिज ग्रेस बी विद ऑल ऑफ अस उनकी कृपा हमारे साथ बनी रहे वो सबसे जरूरी है और जैसा कि आपने बताया कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ ना कुछ भगवान की ही कृपा है जो उन्होंने जन्म ऐसी देवभूमि में दिया पहले तो मनुष्य का शरीर दिया मनुष्यों में भी भारत जैसा एक पवित्र देश मुझे दिया और उसके भारत जैसे देश में भी देवभूमि तो एक उनकी कृपा तो है ही स्वतः ही शुरू से चली आ रही है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है इसमें कि हमारा चाइल्डहुड कैसा है लाइक एक्सपोजर कैसा मिल रहा है जैसे देवभूमि से हूँ तो फिर यहाँ पे मैंने अपने माता पिता को अपने दादा दादी को नाना नानी को सबको एक धर्म के कार्य में लगे हुए देखा एक संलग्न एक सार्थक जीवन जीते हुए देखा है तो जब हम किसी अपने बड़ों को देखते हैं हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं तो इसी प्रकार से चलते चलते धीरे धीरे एकदम से कुछ नहीं होता है धीरे धीरे एक बीज जो है पौधा बनता है पौधे के बाद ही वो एक वृक्ष बनता है किसी को पता नहीं है कि एक बीज में बरगद का पेड़ है लेकिन है तो वही बरगद कई किलोमीटर तक फैल जाएगा तो ये उनकी अनुकंपा है अनुग्रह है माँ देवी का जिन्होंने मुझे चुना क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि हम साधना करते हैं साधना हमें चुनती है भगवान हमें चुनते हैं सच में चुनते हैं जिस प्रकार देवभूमि है यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है कि हवाएं जो हैं भगवान शिव और माँ पार्व भगवान शिव की जटाओं से और माँ पार्वती के आंचल से बहती हुई चल रही है इतना आनंददायक एक वातावरण रहता है थैंक गॉड होपफुली आगे भी रहेगा बिकॉज पीपल आर गेटिंग वेरी टॉक्सिक नाउ डेज अब जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से तो वातावरण में दूषित तो होगा ही वातावरण ग्लोबल वार्मिंग भी होगी लेकिन जब व्यक्ति का मन बदलेगा उसका चित्त बदलेगा तब जाके आगे चल के कुछ एक हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख सकते हैं जिसके लिए बहुत जरूरी है साधना और अपने आप को जानना जी Great. Thank you, Abhishek, for sharing that very beautiful, experience of yours. So I would really like to know how did, personally, आपने कहा कि, आपके परिवार के लोग ने बहुत आपको मार्गदर्शन दिखाया. But for you personally, how did it happen? Like, how did you get into sadhana? So, if you can share about that, it'll be great. श्योर आई विल शेयर दैट सो इट हैपेंड लाइक माय मदर बिलोंग्स टू अ फैमिली दे हैव अ टेंपल इन देयर होम माय नाना हैज अ टेंपल दे आर पुजारी टू दैट टेंपल डिवोट सो मदर वाज ऑलरेडी अ Bhakt of Ma Devi. She was a Bhakt, and when I was in her tummy, when she was pregnant, she recited some beautiful slokas and all. See, she was involved in धार्मिक कार्यक्रम्स. तो जब मेरा जन्म हुआ तो जो पिता का परिवार है और माता का दोनों धार्मिक है दोनों ही पूजा पाठ वाले हैं तो सब एक धर्म के कार्य में है मैंने अपने पिताजी को सबसे पहले देखा कि रोज सुबह उठ के वो भगवान की स्नान अभिषेकम करते हैं फिर उनको अच्छे से तिलक करके उनकी आरती करते हैं और गीता जी का पाठ करते हैं मुझे अभी भी याद है मैं पास में बैठ के हेल्प करता था कि भगवान को निकाल दिया और उनको स्नान करा रहे हैं भगवान और पिताजी और वो फिर उसके बाद भगवान का स्नान कर वो पूरी पूजा करके गीता जी का पाठ कर रहे हैं सुनते थे उस वक्त समझ नहीं आता था मैं सच कहूंगा क्योंकि एक मेधा होती है जो बालक में नहीं होती है उसे लगता है ये अच्छी चीज है लेकिन जब वो सुनता है ना बचपन से कि मैंने ये सुना था वो बहुत ज्यादा उसके आगे चल के जो टीनेज है एडल्टहुड है वहां पे वो चीज काम आती है कि उसने पहले तो सुना था तब अर्थ पता नहीं था लेकिन जब उसने आगे सुना तब उसे अर्थ पता चला मुझे ये बताया था जीवन में ये समस्या आ रही है तो मुझे इस प्रकार से इससे आगे निकलना है इस प्रकार मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना है उनका सम्मान करना है ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है क्योंकि जो व्यवहार हम अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी वो हम दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं वो हम कैसे दूसरों के साथ कर सकते हैं तब
भगवान शिव, मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले मेरे आराध्य वही है, माँ अम्बा और भगवान सदाशिव। तो हमारे घर के ही पास एक शिवलिंग है पीपल के नीचे। तो मैं, मुझे याद है मैं नर्सरी क्लास में हूँ, तो मैं रोज भगवान शिव का अभिषेक करने जाता हूँ। नित्य का ये क्रम था, like till my fifth class. I remember I did it every day. Maybe sometimes I was ill or fell sick or something. I'm outside my home. Then I skipped that, but that devotion, that connection was very deep since the beginning. I will not say it was induced, it was there. So yeah, that's how it just took me. You know, एक अलग मोड़ ले लेता है जीवन साधना के चलते चलते। उतार चढ़ाव तो आते हैं जीवन में, और हम लो भी फील करते हैं, डिप्रेस्ड भी फील करते हैं, लेकिन जो साधक है उसकी इलास्टिसिटी, जैसे एक रबड़ अपनी पोजीशन को कितने जल्दी होल्ड होल्ड बैक करेगा, होल्ड बैक करेगा अपनी पोजीशन को, वैसे ही अगर कोई विकार आ रहा है, कोई टेंशन आ रही है, कोई डिप्रेशन है या समथिंग वेरी टेंस्ड सिचुएशन है, आएगी, मन विचलित भी होगा, लेकिन जितनी वो एक्सटेंड नहीं होगा टाइम पे, वो बहुत कम टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा। ये मैंने अपने साथ फील किया है कि जहाँ मैं कई महीनों तक दुखी हूँ, एक दिन में या कुछ घंटों में वो बात दिमाग से निकल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें भूलना सीखना चाहिए। कहते हैं ना कि कोई एक गलती देख के छोड़ जाता है और कोई एक गुण देख के रुक जाता है, तो हमें एक गुण ही देखना है किसी का भी। So, सब में अच्छा ही देखना है जी। Great. Thank you, Abhishek. Thank you for sharing that. Um, we also know that you chant the Lalita Sahasranam, right? So, आपकी experience with that chanting of Lalita Sahasranam कैसे रही? And can you tell us some of your favorite verses and what has really touched you in your entire experience? Because you said your Ishta is Ma Amba and Sadashiv Ji. So, yeah, do tell us a little bit about that. यस, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा कि माँ अम्बा इष्ट कैसे बनी है। तो जो एक बालक होता है, सबसे क्लोज वो अपने माता के होता है, उसके बाद अपने पिता के होता है। भगवान शिव की तो मैं आराधना करता ही था, लेकिन जो एक आंसू निकलते हैं, किसी ने मुझे बचपन में किसी ने कुछ बोल दी, इंस्टेड ऑफ क्राइंग समवेयर एल्स, तो माँ के सामने ही रोना है कि माँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो उन्हीं के साथ एक संबंध धीरे 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 वो गाढ़ होता गया। और मेरे पापा जो हैं, पापा मुझे बुक्स लाते थे, उन्होंने मुझे भगवत गीता ला के दी, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत ला के दिया, उन्होंने मुझे बहुत सारी दुर्गा सप्तशती दी, बहुत सारी बुक्स जो हैं। तो उनका अध्ययन करता था अपने स्कूल डेज के साथ में। तो जैसे चलते चलते एक बार 2018 की बात है, अभी तक साधना तो कर रहा हूँ, 2016 यस, तब मैंने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन शुरू किया था। तो एज अ पाठ नहीं कर रहा था, बस मुझे पढ़ना था। तो 2017 में फिर मैंने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती को अनुष्ठान किया जो था। तो उसमें एक ऋग्वेदों 23 सूक्तम आता है, उसमें हमारा इतना सुंदर वर्णन था, मुझे उसका पाठ करते हुए बस रोता ही गया। और माई मेरी माँ कहती क्या हो गया, मैंने कहा मेरी माँ इतनी सुंदर है, मेरी देवी माँ, उनसे सब कुछ है, मुझे मतलब समझ रहे हो? जैसे किसी के पास एक मणि है, एक हीरा है, उसे पता ही नहीं था उसके पास वो हीरा ऑलरेडी। तो वो उस रियलाइजेशन थी कि मेरी इष्ट माँ ही है, अभी तक नहीं पता था कि इतना गाढ़ संबंध हो। फिर 2018 में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, मेरे पास कोई फोन नहीं था मेरी 12th तक। तो तो जैसा रहता है स्टूडियो स्टूडेंट था, 12th के बाद फोन मिला। तो एक होता है कि किसी की अपने अपने रुचियां होती हैं, हॉबीज होती हैं। मेरी रुचियां थी कि मुझे भजन सुनने हैं, मुझे माँ के बारे में सुनना है, मुझे ये सुनना है। तब मुझे यूट्यूब पे स्वामी जी का विजन ऑफ गॉडेस दिखा, श्री गुरुभ्यो नमः। फिर उसके बाद तब मैंने ललिता सहस्त्र नाम को देखा वहां पे, देवी अभिषेकम जो है, तब मैंने वो देखा। तब भी भाव नहीं आया। जो मेरी जर्नी ये है, मैं उस चीज को जानता हूँ, रियलाइजेशन बाद में होती है, मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन इससे इस बीच क्या होता है कि एक भक्त और भगवान का संबंध धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं ना, जितना सफेद कपड़ा होगा रंग उतना ही अच्छा चढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, आई जस्ट स्पेंट माई टाइम डूइंग लाइक अर्चन पूजा एंड जस्ट सिंगिंग हर मेमोरीज। तब जाके
मैंने ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ा। पहला ही शब्द है श्री माता श्री महारानी श्रीमत सिंहासनीश्वरी। ये माता माँ है जो सृजन करती है, जन्म देती है। श्री महारानी जो पालन करती है, हमें पालती है, जो राजा है। श्री मत सिंहासनीश्वरी सिंहासन पे विराजमान है। जिस प्रकार माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर देती है सिंह पे आरूढ़ होके, तो वैसे ही माँ का सिंहासनेश्वरी का नाम दर्शाता है कि माँ जग का प्रलय भी कर देती है। तो पहले ही नाम में माँ ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही है, बना भी रही है, पालन भी कर रही है। आगे चल के तो अद्भुत ही वर्णन है ललिता सहस्त्र नाम का। कैसे ही कहूँ, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, ललिता सहस्त्र नाम का श्लोक है। अंतर्मुख जो साधक है, अपने अंदर की तरफ जो है, अर्थात अपने आप को झांकता है, अंतर्मुख समाराध्या, उसकी आराधना से ही माँ प्रसन्न होती है। बहिर्मुख से दुर्लभा, जो बाहर की तरफ मुख करके हैं, दूसरों की तरफ है, उनके लिए तो माँ दुर्लभ ही है। ये बहुत ही गूढ़ है कि समयाचार तत्परा माँ को कहा जाता है। समयाचार का अर्थ है जिसमें हम मानसिक उपचारों से माँ की पूजा करते हैं। समयाचार में, कौलाचार में हम बाहरी पूजा करते हैं, जिस प्रकार कौलाचार है। और जैसे कि आज पूर्णिमा है, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे एंड आई एम ग्रेटफुल माँ चोज दिस डे पर्टिकुलरली टू बी, so I'm here. So today is very special day. First, it's Annapurna Jayanti. Ma took the form of Annapurna. Second, it's Tripur Bhairavi Jayanti, which is Ma took incarnation of Tripur Bhairavi, one of Mahavidyas. And thirdly, it is birthday, Jayanti of Bhagwan Dattatreya. He is the child of sage Atri and Mata Anasuya. And Anasuya was that lady जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के अपने बालक के रूप में पाल दिया था, कि उन्हीं बालक बना दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक होके दत्तात्रेय रूप में आके विराजमान हुए। एंड ही इज गुरु ऑफ ऑल विद्या। ही गेव श्री विद्या टू सेज टू भगवान परशुराम when he was searching for that thing. And Dattatreya Bhagwan is Adi, one of the major important Nath of Nath Sampradaya after Adinath and Sindarnath. And he is Mahaguru of Kolachal. He's Mahakal. And he's among the great gurus of Sri Vidya. सो समयाचार तत्परा, माँ समयाचार तत्परा है, अर्थात अंतर्मुखी, जो मानसिक पूजा है, अधिक माँ उससे प्रसन्न होती है। बाहरी पूजा का इतना ही महत्व है कि हम एक बार माँ को बाहर से भी पूजें और बाहर से उनकी पूजा के बाद अपने अंतर मन में भी उनका ध्यान करें। वो एक बैलेंस है। लेकिन आगे चल के साधक को आने तो मानसिक पे ही पड़ेगा, अपने अंतर्मुख पे। अंतर्मुख समाराध्या, उनकी आराधना अंतर्मुखी होके ही की जाती है। जी। Great. Thank you, Abhishek. This is very beautiful that you have shared your experience. I am just curious to know, because while you're doing so much of sadhana, how did you manage to balance your other accomplishments? Because this is a struggle that most youth face, right? Because they are so much stressed with their academics. They have to do, I mean, they have to cater, or they have to adhere to so many expectations from their elders, from their teachers, from their own aspirations as well. How did you balance that experience of sadhana with all your other expectations, and how did you fulfill your aspirations? जी देवी जी, तो साधना, साधना तो एक जिसे कहते हैं नित्य कर्म है मेरा, कि मुझे वो करना ही करना है। क्योंकि सबकी साधना साधना ही नहीं हो सकती है। किसी की साधना हो सकती है, उसे गाना पसंद है, जब वो गाएगा वो उस स्टेट में जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। किसी की साधना हो सकती है उसे खेलना पसंद है, उसे अपना वही कर्म करना चाहिए, उसे उसी में शांति मिलेगी। हमें ये देखना है, हमें शांति किस चीज में मिल रही है। सबको भगवान में शांति नहीं मिल सकती। इतने सारे लोग हैं, किसको मिलती है शांति? और बड़े बड़े से भी हुए हैं, वो लोग तो भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे, साधना नहीं करते, लेकिन वो एक चीज को पकड़े हुए थे कि उन्हें पीस कहाँ मिलती है। तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहिए उन्हें शांति कहाँ मिलती है। तो जब वो पता चल जाता है, तो फिर उस इंटरेस्ट में वो आगे जाएं। और जैसे एकेडमिक्स बहुत जरूरी है, अब हमें अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड तो बेस्ट थिंग इज, कॉलेज या स्कूल में है, पूरा 100% वहां पे प्रेजेंट रहे, क्योंकि मैक्सिमम चीज तो वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। आके तो बस आपको एक रिवीजन ही करना है, बस उसे देखना है और वो माइंड में बस जाएगा। और रिवीजन कर दिया एक महीने के अंदर अंदर 2 बार उसका, इस प्रकार से क्या होगा, बर्डन नहीं होगा। बर्डन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो स्ट्रेस भी नहीं होगा।
तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, तो एक सार्थक जीवन तो अवश्य ही जिएगा। साथ ही साथ बहुत जरूरी है अपनी करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना की, जैसे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है स्कूल में, एक्सपोजर बहुत मिलता है, कॉलेज में भी मिलता है, मुझे भी मिला। एंड आई वाज अ वेरी शाई पर्सन इन स्कूल, बट माय कॉलेज रियली हेल्प्ड मी इन दैट थिंग। लाइक मैंने अपनी शर्म लज्जा को त्याग के अपने सपनों की ओर बढ़ा। इस प्रकार मैं आज बोल पा रहा हूँ आप सबके सामने, वरना मैं एक ऐसा बच्चा था जो बोल भी नहीं पाता। इन दैट टाइम आई रियलाइज माई वन ऑफ माई इंटरेस्ट इज इन डिबेट। मुझे बोलना बहुत पसंद था। उसी के चलते मैं हिंदी समिति का एडिटर बना, उसमें सिलेक्ट हुआ, मैंने एंकरिंग की अपने कॉलेज में। उसी के चलते मैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट में पहुंचा इसी साल। तो वो हमें जानना इंटरेस्ट कहाँ पे होता है। अब इसमें सहायक क्या होता है कि हमें कुछ मेडिटेशन पता हो, कुछ साधना पता हो, जिससे मन जो है, मस्तिष्क जो है एकाग्र हो सके। कि हम सुबह उठ रहे हैं और जैसे हम साधक हैं तो हम सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करते हैं। जस्ट इमेजिन गुरु ऑन आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इज बिटवीन आवर आईब्रोज। एंड आज्ञा चक्र क्यों? क्योंकि गुरु ही आज्ञा देते हैं, तो जो आज्ञा देने वाले हैं उनका स्थान ही इस आज्ञा चक्र पे है। तो इस गुरु, इफ वन इज नॉट हैविंग एनी गुरु फिजिकल फॉर्म और ह्यूमन गुरु, दैट्स परफेक्टली फाइन। वन कैन जस्ट से नेचर इज माई गुरु, बिकॉज प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं। प्रकृति ही सबको सिखा देती है, वही जीना भी सिखा देती है। और सिखा तो कौन सकता है? गुरु ही सकता है। सबसे पहले वो ग्रेटिट्यूड का भाव, एक समर्पण आना चाहिए। तो जब ऐसा साधक करता हूँ सुबह उठ के, एंड आई एम वेरी कॉन्शियस राइट नाउ, मैं पहले नहीं था अपनी हेल्थ को लेके, बट आई आई जस्ट डू जिम एवरी डे नाउ। लाइक आई गिव माई 1 hour in the morning because it's very important to stay fit, to do sadhana, to study well, and to just excel in your life in anything. So उसी के चलते आगे जब एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है अपनी दिनचर्या को बनाता है, अच्छे से फॉलो करता है, उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है रात को कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया। दिल पे हाथ रख के हम कह सकते हैं कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने पढ़ा है। तो गिल्ट के साथ नहीं सो पाएंगे, क्योंकि एक गिल्ट जो है ना अंदर अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। और प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं हम आजकल कि आज नहीं कल करेंगे। बट दैट इज समथिंग यू हैव टू कॉन्कर। फिर साधना ही किस बात की करेंगे? फिर जीवन ही क्या जीना है अगर इतना आसान है? जिंदगी इतनी आसान चीज थोड़ी है जीना। तो इसीलिए तो साधना कर रहे हैं कि हम एक सार्थक जीवन जिए, मन को अपने समेटे अच्छे से। एंड रियली आई विल टेल यू वन थिंग, I was very studious in my childhood, but when I changed my school, the thing happened. I got exposure to a new competition. Brighter students were there, who were intelligent, brighter. They had this thing that they were not shy to talk to people. They were able to do anything, right? And I was like, I didn't got this exposure till now in my seventh. It took me 3 years in my 10th when I just decided that I will do it because no one is gonna do for me. And that time, my mother really helped me. I just thank her कि मैंने डिसाइड किया। मैंने सुना किसी संत से कि ब्रह्म मुहूर्त में बेटा उठना है। हमने सुना, आई जस्ट स्टिक टू दैट थिंग। मैं 3:30 से 4 बजे के बीच उठना शुरू करता था, नहाता था सीधे जाके, मैं आके देवी माँ की पूजा करता था। 4:30 बजे की, आप 4:45 के करीब मैं पढ़ने बैठता था। माँ मुझे कुछ खाने के लिए लाती थी। एंड लेट मी टेल यू, मैं 3:30 बजे उठा हूँ तो मेरी माँ भी 3:30 बजे थी। अभी भी मैं अपने प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ मेरे साथ बैठती है। वो मेरे उठने से पहले उठती है, मेरे सोने के बाद सोती है। till now she is just there to support me. And how can I hurt my parents who are such positive? So we must not hurt anyone around us. And from that Brahma Muhurat waking up, I was studying. And I will not be very, I'm not just मैं किसी वो नहीं करना, आलोचना नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट एक्सेल्ड इन दैट थिंग। जहाँ एक जो बच्चा था अपनी क्लास के अंदर, वो टॉप 5 में भी नहीं आ पाता था। In boards, he scored so well that he got 14th position in his whole state. And there was one teacher, she's from a neighborhood. She came to my classroom. Yeah, you got 14th position, you got first position. She was happier than myself. I was not that much happy. She was for me. So she has seen me from very closely. So that's how. And that time, my one of my auntie said, बेटा हाथ की सब छीन लेते हैं, माथे की कोई छीन नहीं सकता।
So what we have Vidya with us, what we have knowledge, what we have experience, no one can steal that. Anyone can steal materialistic things, but that's how one can really excel. First, have to find what he likes and what where his peace lies. Learn some meditation techniques. Just to that, your mind just stays positive and read a lot of books, whatever you like, and read positive because reading books matters, but reading good books matters more. Correct. Reading any fiction will not help. So yeah, that's how Yeah. we can just manage. Thank you, Abhishek. So your main message is that you had this anchor of your Bhagwan and your Isht throughout, and you made it. You made it a central focus of your life. From the time you could understand the importance of this, so you feel that higher power has guided you throughout in the form of maybe your own intuition, your own willpower, your own discipline, because you said आप 3:30 बजे 4 बजे उठते थे. That takes a lot of willpower, takes a lot of discipline, but you have drawn that inspiration from a higher power, which is your Bhagwan, your Isht, right? And you've also said spoken about the role of your parents in your life, so that is amazing. So if there's one message for the youth today that you would want to pass on, what would it be, very briefly? First of all, it is stay fit. Then it is just be polite to everyone who is there in your aura. And for that, you have to enjoy yourself so that anyone who comes in your aura must enjoy yourself. So people must enjoy you, right? उन्हें अच्छा लगना चाहिए, वो आपके संपर्क में आए. हमें ऐसे बात करनी चाहिए कि लोग हमसे बात करें तो उनका मन शीतल हो, ना कि दूषित और कुंठित हो जाए वो लोग. तो इस प्रकार से अपने आप को समझो, अपनी वृत्ति जो है किस तरफ मुझे जाना है, वो एक क्लियर विजन लिख के बस उसके लिए काम करना है. और जब ठान लो तो बस कर लो, ताकि रात को जब सो तो दिल पे हाथ रख के कह सके मैंने आज कर्म किया है और मुझे कोई गिल्ट नहीं है. कर्म पे ध्यान देना, अच्छे कर्म करने, और बहुत जरूरी है कि हम बस पोलाइटली सबके साथ रहें. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ दिस बिकॉज टॉक्सिसिटी इज ग्रोइंग ऑन. जस्ट बी अ पॉजिटिव पर्सन इन दिस टाइम. Yeah, thank you, Abhishek, for that wonderful message. I just wanted to, bring your attention to this beautiful announcement of this grand 18 lakh Sri Ram Yagya mission that we have taken up. You already know about that, I suppose. So we would love I would just like to first of all ask you, have you performed the Sri Ram Yagya yourself? Yes, I perform it in every morning when I do puja. Yeah. Oh, that's great. We would really love for you to invite your audience to participate in this grand mission. So if you could just kind of extend an invitation right now on the show, it'll be wonderful. So I just request everyone, whosoever is here listening, who know me, if you really want to do something beautiful while you are studying, you can just tap on your screen, go to Google Store or Apple Store, iStore. There you just install Sadhana app, you just join it and do Yagya in Ayodhya. There is Ayodhya, Sri Ram is just waiting there for you. And when you do a Mansik Yagya, right, it's more important you do a Mansik Yagya instead of doing a Yagya yourself, because it requires time, it requires concentration. And when you just tap on your screen and just plug your earphones or AirPods, whatever it is, you just go into a different dimension. Then that is something very divine. And Ayodhya is not just a place, it's a Mukti Bhumi because it is one among the seven Puris. Seven Puris, and among that, Ayodhya is residing on the Chakra of Sri Hari. भगवान विष्णु के चक्र पे वो विराजमान है. And when you just go mentally there, you just visit that holy place, you just do offer a yagya. That is a very important karma for any Sanatani or anyone. Just perform their yagya. And trust me, the Mansik yagya is equally powerful to just get the blessings of Bhagavan. It really helps. You can just tap on your screen in Sadhana app and do a yagya to offer to welcome a Sri Ram. After so many years, he is coming. It's like a grand festival should be there. So join us in this 18 lakh Mahayagya. It's a Mahayagya actually. Everyone is doing off his offering. क्योंकि
भगवान के सेतु को बनाने में गिलहरी ने भी सहयोग किया था, और हम गिलहरियां ही हैं, उससे भी कम है। अगर हम कर पा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी, बहुत श्रेष्ठ का एक कार्य है। Yes. Yeah. Thank you, Abhishek. To add to what you have said, I would just like to, kind of reiterate the fact that there are a lot of people that really feel a deep connection with this event that is happening, and this is perhaps one of the greatest milestone events in the history of Sanatanis. Right, we have not only gone through a lot of struggle, but we have won. This is a beautiful victory. This is something that we can proudly claim as, we have fought for this to be preserved. We have fought for Sri Ram to come back to us, and he is with us today after 500 years of, I don't know how many struggles. It's just gone on and on in various phases, various forms, and so many people have, contributed to the success of the Ram Janmabhoomi Ayodhya Mandir that is going to be inaugurated on January 22nd. And everybody feels that in our veins, in our blood. Everybody wants to be associated with it. Everybody loves Sri Ram, and everybody wants to do something, be a part of it in some way, right? And since everybody cannot be at that place at Ayodhya, like Abhishek said, it's a punya bhumi, but we all want to do something, contribute to the cause in some way. So I really urge all of you to think of the Ayodhya on Sadhana app as, the place that you're going to visit Sri Ram and welcome him and perform a yagya for his arrival. It feels like you are bringing him, his manifesting his persona, his presence into your lives, into your homes, right? You can sit anywhere and invite him into your space, into your presence, and sit face to face and welcome him. So this is like an antidote for all those people who cannot make it to the physical place of Ayodhya. And it's just like Mere Ram aayenge wherever we are, right? So this is the advantage. This is the beautiful offering of Sadhana app that all of us are so blessed to have, right? And I really urge all of us that are listening to this show and who will watch this show later on as well to just pick up your phones and open up Sadhana app and click on Ayodhya and welcome Ramji with the Yagya and contribute to this grand mission, because these are not just about numbers. It is about reclaiming and reinstating your cultural identity, reclaiming your heritage. So, and like Abhishek said, सारे गिलहरियां हैं हम. So, but even that one gilhari could be a great, push towards the mission, and you could be that spark that starts a whole wildfire, right? So join us for the Yagya Sankalpa, the Mahayagya Sankalpa, a collective 18 lakh Sri Ram Yagya. And I would also like to say that if we, achieve this would be an unprecedented feat, and it could also be a potential world record. So I really, this is a clarion call for all of us to join in this cause and make this happen, right? So thank you, Abhishek, for those wonderful insights. Thank you for sharing your journey. I hope everyone enjoyed this session just as much as Abhishek and I did. I really enjoyed talking to you, Abhishek. And I would say please stay tuned as we bring more and more interesting people and perspectives to you on our Sadhaks of Sadhana show. Stay tuned, and we will be back next week. We'll be closing with a small prayer. Abhishek, Yes. if you want to Yeah, lead. actually, I was about to say that. So just a closing chant as we have called upon Bhagwan. Yeah. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Narayan Namaste. Jagan Mata ki कृपा हम सबके बनी रहे. And earlier we were surviving, now we are thriving in our welcoming our Bhagwan Ram. So just do your offerings, just do it. Thank you.
Thank you very much. Until next time, goodbye.